Good evening, viewers. You're watching 7 at 7 on India Today. We're going to get you the very latest coming in from Morbi, Gujarat. We're going to make you get, we're going to have on live with us the ones that saw, the eyewitnesses of this entire event, the saviors who saved over 50 lives. We're going to have them live right here. Preeti Chaudhary, these are the headlines. 9 arrested for Morbi bridge collapse. Name of Oreva group that was responsible for the maintenance of the bridge added to the FIR. CCTV images show final moment of ill-fated Gujarat bridge that killed 133, amongst them 47 were children. The youngest was a 2-year-old toddler. Prime Minister Modi to visit the area tomorrow. शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है। Politics speaks over Morbi bridge collapse. Congress and TMC trains guns on Gujarat government. Congress questions why bridge was opened without permission. TMC calls it act of fraud. The Home Minister speaks on language row, says local language needs to be kept alive. Bats for research and technical education to be imparted in local languages. भाषा में सोचने वाला बच्चा, अपनी भाषा में लिखने वाला बच्चा, अपनी भाषा में बोलने वाला बच्चा, अपनी भाषा में रिसर्च एंड डेवलपमेंट अनुसंधान करने वाला बच्चा अगर देश की विकास की प्रक्रिया में नहीं जुड़ता है तो हम 95% बच्चों को देश की विकास की प्रक्रिया से काट देंगे. Center informs court that there could be certain developments in reconsidering sedition law during the upcoming winter session. Virat Kohli alleges breach of privacy in hotel room. Intruder breaks in, shoots a video of the room. Virat's emotional appeal to fans on Instagram says, please respect my privacy. Big announcement by BCCI. Umran Malik returns as Hardik Pandya named Indian captain for the New Zealand T20s. Shikhar Dhawan to lead in ODIs right after the World Cup. Viewers, as we continue to recount the tragedy that took place yesterday in Gujarat's Morbi with the collapse of the bridge taking over 130 lives, there were but a few good men who came out in the nick of time and helped save many, many lives, the saviors of Morbi. Heartbreaking images of grief, of sorrow in Morbi as the scale of the tragedy has shocked all of India. Families wiped out, friends left in tears as what was supposed to be a fun weekend turned into one they will never forget. Over 130 lives lost in this horrific tragedy, but hundreds who were also rescued thanks to the heroic efforts of locals and the NDRF officials on site. The moment the bridge collapsed, locals present at the spot jumped into the water in a bid to save as many as they could. Ajay and Pankaj from Varanasi were at the site when the crash took place, and they recount how they tried to pull out all those that had fallen into the water. सर भीड़ बढ़ रही थी तो पुल जो है लचक रहा था सर. कौन लोग थे जो कह रहे थे कि मत जाओ भीड़ आगे जा? हमारे ही लोग थे सर. महिलाएं थी ज्यादा, औरतें थे या बच्चे ज्यादा? बच्चे महिलाएं सब लोग था ज्यादा, लेकिन बच्चे लोग ज्यादा था. बच्चे लोग को दो लोग को कान पे मैं टांग कर ऊपर लाया. As the scale of the disaster became clear,
NDRF and SDRF officials were pressed into action and locals actively helped them. ब्रिज सेफ था क्या, सुरक्षित था पहले? हाँ, सुरक्षित ही था, वो चालू ही था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, नया ही था, क्योंकि अभी रिनोवेट करके कंप्लीट करके ही रखा था। ऐसे कोई पुल आज पहला दिन था? नहीं, ऐसा नहीं था। लास्ट 6-7 दिन से ये दीपावली की छुट्टी से चालू शुरू कर दिया। चालू। अब देखिए बहुत सारे लोग आए हैं मदद के लिए, देखिए खाना वाना भी लेकर के आए हैं। इतनी बड़ी वर्कफोर्स यहाँ काम कर रही है, एम्बुलेंस के लोग हैं, पुलिस कर्मी हैं, सिविल डिफेंस है, तमाम सारे लोग ये इसीलिए आए हैं कि कम से कम किसी भी तरह से इस पूरे ऑपरेशन को लगातार चलाया जा सके। The personnel on site struggled to sift through the polluted lake filled with debris, weed and plastic and have been working round the clock to ensure all bodies are pulled out. बीती रात से जो ऑपरेशन चला था और ये अंदाजा था कि ये कई घंटे तक चलेगा, लगभग 15 घंटे का समय बीत चुका है और अब आखिरी चरण में है पूरा ऑपरेशन। ब्रिज का जो पूरा हिस्सा है चूंकि उसको काट करके निकाल लिया गया है, तो अब इस समय जब हम बात कर रहे हैं हमारे ठीक आसपास में ही लगभग 2 नेवी के गोताखोर है जो इस समय पानी के नीचे हैं। अब सबसे बड़ी मुश्किल ये है, रात में एक तो रोशनी नहीं थी, दिन में जो समस्या है वो ये कि जो गोताखोर अंदर गए वो ज्यादा देख नहीं सकते, पानी इतना गंदा है कि अंदर विजिबिलिटी नहीं है। तो जो पारंपरिक तरीका है वो ये है, इस तरह के हुक फेंके जा रहे हैं और जब वो हुक फेंकते हैं तो इस कोशिश में कि जब उसे खींच रहे हैं अगर कोई शव है तो कम से कम कपड़ों में फंस के या शरीर में फंस के तो उसे कम से कम खींच के निकाला जा सके। Despite all the challenges, rescue personnel and locals have been working hand in hand to ensure every body is fished out of the Machchhu river. The city hasn't slept since last night. People are out on the road managing traffic, crowds, so there is not any disruption of the administrative fleet or the ambulances. In fact, where we are seeing hundreds of the personals who are working round the clock since last late night. These civilians here in the community centers are making food for them, arranging food for them, water, juice, biscuit, everything, and every minute they are ensuring that how it should reach to the personals, those who are working at the rescue side, because the operation yet not known how long it may take. These heroes ensured that many of those who fell into the water were rescued immediately and are now as a community doing everything they can to help those in these terrible times. With Ashutosh Mishra in Morbi, Gujarat, Bureau Report, India Today. Whereas in this time of acute tragedy, these are those men you could call heroes, you could call them saviors. Some of them laborers who had their little hutment right next to the river when this tragedy took place. I'm joined by 2 of them right now. Ajay and Pankaj join me. They were the first ones to jump into the waters. I spoke to them earlier. I'm going to cut across to them right now. अजय और पंकज, आप दोनों ही पहले थे जो कूदे, लोगों को बचाया। आप देखिए, जरा हमें बताएं क्या देखा आपने कल 6 बजे के बाद जो भी हादसा हुआ, जैसे ये घटना घटी, हमें बताइए। 6:30 बजे की बात है मैडम, हम लोग पुल के पास बैठे, इधर हम लोग का झोपड़ा है, उसी के सामने हम लोग शेल्टरिंग वाला काम करता है। हम लोग वो आदमी लोग को बोल भी रहा था कि ज्यादा मत इसको जोड़ दो, मत इसको ज्यादा हिलाओ, टूट भी सकता है। 2 मिनट बाद टूट गया। 2 मिनट बाद टूटा। मैं और मेरा राहुल भाई साथ में, हम लोग 2 लोग गया पुल के ऊपर, आदमी लोग को निकालने चालू किया। उधर घाव भी थोड़ा मोड़ा मुझे भी लग गया है और उसका तो तबीयत ज्यादा खराब हो गया था। उस दवा शाम को खिलाए, वो सही हुआ है अभी। फिर सब लोग को निकालते गए। अजय, आप भी साथ में थे पंकज के, आप जरा बताइए कि आपने क्या देखा और आप क्यों कूदे पानी में, क्योंकि आपने बोला था कि आप बार बार बोल रहे थे कि ज्यादा पुल को मत हिलाओ, बहुत सारे लोग हैं उसके ऊपर। मैडम, हम लोग देखा है कि इतनी पुल पे भीड़ थी, जो कि हम लोग अपने रूम पे थे, बैठे हुए थे, बगल में पुल है, झूलता पुल है, उस पे इतना भीड़ लग गया था, इतना जमावट हो गया था कि हम लोग बोला कि उस पे मत उतना जोर दो, उतना मत चढ़ो। मैं फिर भी उन लोग नहीं माने और चढ़ते गए। उसके बाद 2 मिनट बाद ही पुल पलट गया। पलटने से पूरी जितने लोग थे सब नीचे दब गए मालवे में, और जितने बचे हुए थे 2 भाई हम दौड़े पहुंचे और वहां पे कंधों पर अपने तान कर ऊपर चढ़ाते गए, हम लोग को बाहर निकालते गए। और उसके बाद आधे घंटे बाद एम्बुलेंस आई और
रेस्क्यू टीम वाले आए, हम लोग से इतना हो सका 30 से 35 से 40 लोगों को हम लोगों ने निकाला, बचाया। और उसके बाद 2 बच्चों को भी हमने बचाया, जो कि एक बच्चा मर चुका था जो कि 4 साल का था, और एक बच्ची 4 साल की थी, उसको हमने बचा ली, और एक बच्चा 4 साल का था, वो मैडम मर चुका था। अजय, जरा आप मुझे बताएंगे, जब आप देख रहे थे नीचे से, आप दोनों देख रहे थे, आपको क्या लगा? आपको लगा कि बहुत सारे लोग थे इसीलिए पुल टूटा? आपको क्या लगा कि पुल क्यों टूटा? जी हाँ मैडम, इतना ज्यादा लोग थे उस पे कि वो पुल भार सह नहीं सका, इसी कारण वह टूट गया। आप कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग थे इसीलिए पुल भार सह नहीं सका। आप कह रहे हैं, आप चिल्ला भी रहे थे कि इतने ज्यादा लोग ना जाएं। मुझे ये बताइए आप अजय, जब आप और पंकज और आपके सहयोगी कूद के लोगों को बचा रहे थे, जैसे पुल टूटा, वहां पे जो ठेकेदार थे, क्या उन्होंने कोई मदद की थी? क्या हुआ था उस वक्त? हाँ मैडम, हमने देखा जब पुल टूट रहा था, जब टूटा तो हम लोग मौके वारदात पे खुद थे और देखे। जब टूटा तो एक बाइक पलटी मार कर गिरा पुल की, जो कि जितने लोग थे उसमें, जितने व्यक्ति थे, सब उसमें नीचे दब गए। जो बच गए ऊपर जो चिल्ला रहे थे उन लोगों को तो हमने बचाया, मगर जो नीचे दब गए थे उन लोगों का अनुमान नहीं कि हम कैसे निकाले कैसे ना निकाले। फिर भी हम लोग अनुमान ये लगा रहे थे कि शायद 5 फुट गड्ढा होगा, या तो 7 फुट हो या तो 10 फुट होगा। बाद में पता चला कि नहीं, ये 20 फुट गड्ढा है, जो कि उसमें एक हाथी का भी पता नहीं चल सकता है, इतना बड़ा गड्ढा है। जो कि उसमें 5-6 फुट मलबा भी है, जो कि उसमें इतना कचरा है कि पूरा आदमी का शरीर भी उसमें खड़ा हो जाए तो पूरा वो धंस सकता है। अजय, मैं पूछ रही थी आपसे कि वहां पर जो ठेकेदार थे, जो टिकट दे रहे थे, जैसे लोग आगे बढ़ रहे थे, क्या उन्होंने भी मदद की थी या वहां पर कोई नहीं था? जब ये हादसा हुआ सब भाग गए थे, बस आप लोग थे? और आपने जैसे मुझे पहले बताया था कि एनसीसी के कोई कैडेट थे, वो भी साथ जुड़े थे आपके? नहीं मैडम, जो लोग ऊपर थे पानी के ऊपर, वो लोग तो तैर कर निकल रहे थे उस साइड से, जो कि पश्चिमी साइड से। और जो लोग नहीं तैरना जानते थे उसमें हाथ अपने मार मार कर उसमें बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे। तो जो लोग जितना तक पहुंच था लोग बचाए, जो लोग नहीं पहुंच पाए वो लोग तो बेचारे मर चुके थे, मर गए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बताइए मैडम। बहुत शुक्रिया अजय और पंकज हमसे जुड़ने का, बहुत शुक्रिया कि आपने हमसे बात की। I want to cut across right now to my colleague Gopi Manyar, who spoke to the IG, who just addressed a press conference giving us details on those who've been arrested. Listen it. जो दुखद घटना बनी थी उसके अंदर 9 लोगों को अरेस्ट किया है और तमाम के विरुद्ध में भारतीय दंड संहिता के कलम 304, 308 और 114 के तहत इसमें गुना दाखिल किया गया है। सर, इस पूरे मामले में कितनी मौत अब तक दर्ज हुई है? ऑफिशियली कितनी मौत दर्ज हुई है? बच्चे कितने हैं उसमें? अभी तक टोटल जो मौत दर्ज की गई है 134 है। बाकी इसमें लगभग 10 के आसपास लोग इंजर्ड हुए हैं। इसमें एक व्यक्ति की कंडीशन क्रिटिकल है, बाकी 9 लोगों की कंडीशन नॉर्मल है। फिर भी हमारी तमाम प्रकार की मेडिकल की टीम है, उन पर 24/7 ये वॉच रखे हुए हैं, जिससे किसी भी व्यक्ति को कोई प्रकार का नुकसान नहीं है। साथ ही एक सवाल ये भी खड़ा होता है, जो कंपनी है, क्योंकि ओरेवा कंपनी है, उसकी टिकट पे भी फोटो और लोगो लगा हुआ है, तो क्या उस कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही पुलिस करेगी? देखो, पुलिस ने सभी मुद्दाओं को खुला रखा है। पुलिस कोई भी कंपनी हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी को छोड़ने के लिए हम लोग इसमें तमाम प्रकार की जो हमारी कायदा की प्रक्रिया पूरी करेंगे। किसी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा, भले कोई कंपनी हो, कोई भी व्यक्ति कितना भी क्यों न बड़ा हो। लेकिन पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन जो अभी तक शुरू हुई है, उसमें हमारा प्राथमिक तबक्के जो एफएसएल की रिपोर्ट हो, स्ट्रक्चरल डिजाइनर की रिपोर्ट हो, ये सब आने के बाद हम एनालिसिस करेंगे और जिसका जितना रोल आएगा उसके अनुसार हम उसकी जवाबदारी फिक्स करेंगे। इनिशियल जांच में क्या लगा, स्ट्रक्चर में कहीं गड़बड़ थी जिसकी वजह से ब्रिज गिरा है? अभी जो 2 दिन की इन्वेस्टिगेशन उसके अंदर लगता है कि इसमें टेक्निकल जो खामी थी उसकी वजह से इसमें ये नुकसान हुआ है, ब्रिज कोलैप्स हुआ है। और जैसे ही इसमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हम आपको इसमें अपडेट करते रहेंगे।
बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इस पूरे ब्रिज जो है, ब्रिज के स्ट्रक्चर में कहीं गड़बड़ हुई है, जिसकी वजह से ये ब्रिज जो है वो कोलैप्स हुआ है, यही पुलिस का मानना है। साथ ही जो कंपनी का जिक्र हो रहा है, ओरेवा कंपनी का जिक्र हो रहा है, उसके खिलाफ पुलिस का कहना है कि जैसे जैसे एविडेंस मिलते जाएंगे उसी तरीके से उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। इस पूरे मामले में किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, मोरबी आज। All right, viewers, let's quickly cut into the latest news break that we are getting in. 9 arrests have now been made in the Morbi case after detention of 7. 9 other people have been arrested. That's the latest that we are getting in right now. The manager of the company involved of Oreva has also been arrested. 2 officials now from the company in question, which had the contract Oreva, have now been arrested, taking the total arrests right now to 9. 2 of them, you see these visuals there of those who've been taken in, arrested. 2 of them are officials with Oreva. The other ones, local contractors who were giving out tickets, who fled the minute the incident took place at about 6:30 p.m. That's the latest that we're getting in, viewers, right now. News just coming in that the police, Gujarat police, has made its first round of arrests hours, less than 24 hours after the bridge collapsed. Will big heads roll? That's the other question that comes to light. Or will the action be limited to the employees of Oreva company and the local contractors who were present at the time of the incident, who were disbursing and distributing tickets? The latest that we are getting in right now, after the first line of detentions, the Gujarat police has arrested 9 in the Morbi bridge collapse. 2 officers of the Oreva group have also been arrested. It's the maintenance company. The arrests have been made there. The latest that we are getting to understand is that in all right now, the police have arrested 9 in the massive tragedy that has taken place, taking 133 lives. Meanwhile, while these arrests have taken place, questions have arisen. Will big heads roll? When we talk about big heads, the contract, the MCD, which comes under the Gujarat government, of course, politics right as well. That where will the buck stop? Will it stop to what we see on our television screen with these 9 arrests, the local contractors who were present at the time of the incident, and 2 officials from the Oreva company? Right now, viewers, let me quickly move on and get you the timeline of this entire incident. A century-old pedestrian bridge on the Machchhu River, Gujarat's Morbi city, collapsed on the evening of October 30th due to sheer negligence. 133 people have lost their lives. 47 of those are children, viewers. Around 6:30 p.m. on Sunday evening, disaster struck a British-era suspension bridge on Machchhu River in Gujarat's Morbi city. Hundreds of revelers, including dozens of children, out for a joyful evening on the legendary Jhulto Pul, or the hanging bridge, suddenly plunged into the Machchhu River. Horrified screams rented the air as iron cables of the bridge, crowded many times, its capacity snapped. After some in the crowd shaked the bridge vigorously. Many others were left dangling from the broken portion. Some were seen pulling at the snapped wires to stay afloat. The locals were among the first to respond, rushing into the river to rescue the victims. जैसे मैंने देखा जब पुल ऐसे जैसे अमुक लोग क्या होते हैं कि आजकल के फैशन वाले लोग हैं, इसमें जवान लोग भी हैं, बहुत मैंने हेल्प की है और पूरी रात सोया नहीं हूँ मैं। मैंने मेरी लाइफ में 10 बच्चे लाया, इसमें एक लड़का जिंदा है।
पूरे पूरे दिल देने वाला। मैडम मेरा मगज ही काम नहीं कर रहा था कि मैं आज क्या कर रहा हूँ, ये क्या दुख देख रहा हूँ। मैडम बस मेरे अल्लाह और भगवान से एक ही प्रार्थना है, किसी को ऐसी मौत ना दे। मैडम The Gujarat government immediately pressed NDRF and SDRF personnel into service, who ended up saving over 170 lives. 50-60 तो वो झूलता पुल पर ही लटक रहे थे, तो पहले तो उसको लगा दिया तो वो ऊपर चढ़ के चले गए। बाद में इधर जो लाश पड़ी थी उसको निकाल के रस्सी से बांध के 15 लाश यहाँ से ऊपर चढ़ाई, जिसमें 3 बच्चे थे छोटे छोटे। Gujarat CM Bhupendra Bhai Patel arrived at the spot at around 11:30 p.m. to oversee the rescue operations. While the rescue operations continued through the night, CM Patel held a review meet at 3:30 a.m. By early Monday morning, Army, Navy, Air Force personnel also joined the rescue operations alongside NDRF and Fire Brigade personnel. Look at this thickness of this cable, literally 5 to 6 inches of this cable, and this is how it broke upon. So one part of the cable still hanging upon, which is supporting the rest part of the structure, and this is how it damaged. This is so heavy, I can't even lift it. And this was supporting the suspension bridge. This is where it broke upon. And now you can imagine if this kind of structure literally breaks out, how fast it would have literally gone down. But by morning, the Morbi bridge mishap had become one of India's biggest ever tragedies, with at least 45 children, including some toddlers, being among those dead. Family members of the deceased were inconsolable, as funeral pyres were lit in several villages. हमको 7 बजे पता चला, फिर हम 2-3 घंटे उसको ढूंढने में लग गए, फिर 10 बजे हमको बॉडी मिली उसकी, तब वो डेथ हो चुका था उसका। Prime Minister Narendra Modi too broke down while expressing his grief and assured full support from the centre. हादसे में जिन लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा है, मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है। Gujarat is still in mourning, wondering whether the loss of lives could have been avoided. With Ashutosh Mishra and Gopi Manyar, Bureau Report, India Today. You're watching a fact-check segment where we bust certain claims masquerading to be facts on social media platforms and WhatsApp groups. There's a claim suggesting Ramiz Raza slammed Pakistan after T20 World Cup defeat. Well, the 2021 video of Ramiz Raza is criticizing the Pakistan team, nothing to do with the World Cup.